Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to do the concept of noun. You have already learned that a noun is a word that identifies a person, a thing, a place, or an idea. Noun is the name of a person, place, thing, or an idea. Idea हम किस में करते हैं? Abstract noun में. Read these sentences. The world is a wonderful place. The man went up the hill. World, place, man, hill. Written in bold. So these are nouns. In these sentences, the highlighted words are examples of noun. Read these sentences. He took his pet to a vet. Vet पता है ना? Veterinary doctor. I met my aunt at the post office. The highlighted words in these sentences are common nouns. First of all, we have to learn the definition of common noun. It's very easy, common noun and proper noun, because you have done so many times. A noun that names a person, place, animal or thing in general is called a common noun. Like pet, vet, aunt, post office, all are these common noun. Suppose in a class I am calling a student. Hey boy, hey girl, come to me. Then nobody knows that to whom I am calling. If I call a particular name, that Rohit come to me, Riya come to me, then you come to know that कि मैम किसको बुला रहे हैं. सो एक जनरल नेम, चाहे वो किसी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का हो, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन. आई स्टडी इन अ स्कूल. School is a common noun. I study in Arbor Grove School. Arbor Grove School is proper noun. I am going to the city. City is my common noun. I am going to Shimla. I am going to Delhi. I am going to Karnal. I am going to Ambala. So, this is proper noun. Now, read these sentences. He took Minnie, his pet kitten, to a vet. Pet का क्या name है? Minnie. Now I am having a particular name of a pet. So Minnie is my proper noun. I met Kiran at the post office. Now Kiran is proper noun. These are very easy to understand. The highlighted words in these sentences are proper nouns. It always begins with a capital letter. Students, proper noun always starts with a capital letter. Look here. जब आपको कोई एक्सरसाइज या असाइनमेंट गिवन होता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का, आपको सेंटेंसेस मिक्स करके दिए जाते हैं. समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज कि मैम क्लियर नहीं हो रहा है कि विच इज़ प्रॉपर नाउन एंड विच इज़ कॉमन नाउन. सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन दैट प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कलेक्टिव नाउन इन ब्रीफ. सो सी हेयर. कलेक्टिव नाउन, a noun that stands for a group of people, animals or a thing is called collective noun. Students, we have given a particular name to a group. You have done this concept of collective noun in 3rd standard and also in 4th standard, if you remember. Examples are a pack of cards, a swarm of bees, a pride of lions. You can see that we have given different name for groups. हम ऐसा नहीं ना लिखते सबके लिए ग्रुप ऑफ कार्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बीज, अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स. वी हैव गिवन अ डिफरेंट नेम.
a pack of cards, a swarm of bees, a pride of lions, a group of dancers. We can also write a troop of dancers, a committee of members, a bunch of keys, a flock of sheep, a band of musicians, a pack of cards, a crowd of people, a litter of puppies. There are number of collective nouns. Army of soldiers, class of students. Next is your abstract noun. A noun that refers to a quality, a thought or an idea is called an abstract noun. Abstract noun like love, anger, beauty are not countable and have no plural form. Abstract noun को हम कभी काउंट नहीं कर सकते और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती. फाइन. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी इजी वे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. लाइक जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लाइक जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते. क्योंकि लाइक अगर कोई ब्रेव है तो हम उसकी ब्रेवरी सिर्फ उसके एक्शन से, उसके एक्ट से हम रियलाइज़ कर सकते हैं दैट ही इज़ अ ब्रेव पर्सन. किसी के फेस एक्सप्रेशन को देख के हम रियलाइज़ कर सकते हैं दैट पर्सन इज़ हैप्पी, दैट पर्सन इज़ सैड, दैट पर्सन इज़ एक्साइटेड. All are these are the examples of abstract noun. Some more examples are here. Truth, faith, beauty, happiness, defeat, anger, humanity. I am repeating once more that abstract nouns are not countable. Can we count truth? No. Can we count faith? No. Can we count beauty? No. And they have no plural form. Truths, faiths, no. We cannot write like this. So we cannot write abstract noun in plural form. People lost faith in banks. She will defeat them. They laughed at my idea. We should always pick the truth. Faith, defeat, idea, truth are my abstract nouns. Now here are some adjectives and I am making abstract noun from these adjectives. Beautiful, beauty, dark, darkness. These are not nouns. These are adjectives. Deceitful, deceit. आपने हिंदी में की है ना. आई थिंक भाववाचक संख्या बोलते हो आप इनको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को. बच्चा, बचपन. तो इस तरह से हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको. डिसीटफुल, डिसीट, डीप, डेप्थ, ब्रेव, ब्रेवरी, courageous, courage, high, height, honest, honesty, loyal, loyalty, poor, poverty, proud, pride, true, truth, young, youth, wise, wisdom, strong, strength, short, shortness, kind, kindness, child, childhood. I am giving you so many examples so that you will be able to understand the concept of abstract noun. So I am giving you different examples. Next is my countable and uncountable noun. आपको ये concept countable और uncountable noun का easy बहुत लगता है, but sometimes we get confused. Yes, yes, I know very well when I give test in classroom. ओके, अकाउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड इन नंबर्स. जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, दैट थिंग्स आर काउंटेबल. वी यूजुअली राइट ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जब हम सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो हम उससे पहले ए और एन का यूज़ करते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर हियर. चिल्ड्रन, टूथ, ब्रश, बॉय, बैग, बेंचेस, क्लोथ्स. वी can count all these things in numbers, like 3 ice creams, 4 balls, 1 tree. We can count in numbers. Next is our uncountable noun. A noun that cannot be counted in numbers are uncountable noun. We never count uncountable noun.
Examples: gold, paper, wood, information, furniture, ship, oil, water, sugar. All are these the examples of uncountable noun. Now learn these things, learn these points very carefully. Some nouns appear to be singular but are always used as plural. कि कुछ nouns जो हैं हमारे वो singular form में हमें नज़र आते हैं लेकिन वो होते हैं plural हैं. People, cattle, audience, a group, crowd of people, a herd of cattle. लेकिन ये हमने ऐसे तो नहीं लिखा ना ये पीपल्स, कैटल्स, ऑडियंसेस, तो ये हमें दिखते सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन ये होते प्लूरल हैं. तो ये भी हमारे एग्जांपल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के. सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर लाइक सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस. सम नाउन्स अपीयर प्लूरल बट आर यूज्ड एज सिंगुलर. पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़. अब लास्ट में हमने ऐसे यूज़ किया है ना इसके, बट ये होते हमारे सिंगुलर हैं. तो ये भी हमारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अनकाउंटेबल नाउन के. स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी इजी फॉर्म. सो यू हैव टू डू पार्ट ए, Part B, Part C in your book, not in notebook, in your book. You have to try your own. The next day I will send answer key. Okay? I know that you will be done easily. So students, this was